गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन काफी ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे हाउ टू डू एग्जैक्ट काउंटिंग। सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट डू आइदर ओवर काउंटिंग और अंडर काउंटिंग। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इन दिस वे। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज इन यूनिवर्स फॉर माई एग्जिस्टेंस। या तो मैं एग्जिस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो सपोज इसको मैं यूनिवर्स का नाम दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स में उसे सेट एस बोलते हैं। So either I will exist or will not exist, right? तो if I'll take one person, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सेट के अंदर होगा या फिर सेट के बाहर होगा। What if I take two objects A and B, और मान लो मैं दो पर्सन अन्नी और बन्नी को ले रहा हूँ, तो फिर अब हमारे पास चार ऑप्शंस है। या तो अन्नी और बन्नी दोनों एब्सेंट होंगे, या फिर अन्नी प्रेजेंट बन्नी एब्सेंट, ये रीजन। This common region shows Anni is absent and Bunny is. This common region shows Anni is present, Bunny is absent. और ये वाला जो रीजन है, this will show Anni is absent and Bunny is present. राइट? तो हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो वहां पे हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज है। तो इफ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, आइदर इट विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट। सिमिलरली बी के लिए इट विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो दो सेट से हमारा ऐसा चार पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। अब इसको एक लिखने का तरीका है ए यूनियन बी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच यू कैन सी इन द पिक्चर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी बिकॉज दिस पार्ट इज काउंटेड ट्वाइस। सो दैट विल गिव मी एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी। तो ये बताता है आइदर इन ए और। Similarly, if I take three sets, अन्नी बन्नी एंड चिन्नी, तो यहाँ पे हमारे पास तीन possibilities will be there for all of them to be present. So let's A, B. So if I take three sets A, B and C, we'll have three possibilities. In any of the region, either A will be present or absent. Similarly, B is going to be present or absent. And C will be present or absent. So in total, I'll have 2 cube, which is 8 possibilities in total to have this outcome, which I have shown with this diagrammatic representation. So number of elements in A union B union C will be, we can add all three of them, but when I am adding all three, I am counting this region twice. So to account for this, I subtracted. Similarly, I have counted this region twice as well, so we subtracted, and so on so forth. Now since I have taken all these three regions, so what I am getting is the empty region over here. So this becomes empty, actually void. So that's why in order to compensate for that, I have to add it. So hence we have famous formula for three sets. A union B union C goes like this. And now for four sets, of course you can't draw the Venn diagram with the help of a circle. That you can try, because for four sets A, B, C, D, we'll have 2 to the power 4. So 16 regions should be there. If we'll try with the circle, which is left as an exercise for you, तो आपके पास 16 रीजन बन ही नहीं सकती। तो चार सेट आप सर्कल से नहीं बना सकते, तो उसको अलग वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इलिप्स से बना सकता हूँ, और तीन सर्कल और एक कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर से भी बना सकता हूँ। ठीक है, एनीवे इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज दैट, तो हम वो नहीं करेंगे। चार के लिए क्या आएगा, सिग्मा ए टेकन ऑल एट द टाइम माइनस टेकन टू एट द टाइम, सो विल हैव 6 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, देख सकते हो। देन टेकन 3 एट अ टाइम, सो 4 ऑब्जेक्ट्स, एंड टेकन ऑल एट अ टाइम ओनली 1 ऑब्जेक्ट्स। तो ये आ जाएगा 4C1, सो 4 ways of adding all of them. Then 4 choose 2 element, then 4 choose 3 element of 3 element each, and finally we'll have 4 choose 4, so there is only one way of getting all of them together. चलो अब इससे फील तो आ रहा है, लेकिन the best way to understand this concept will be if I apply to problem. So here we go with the first problem. Number of ways to color this 4 cross 2 grid. तो चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करते हैं, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड फन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. The first question goes like this: number of ways to color this 2x2 grid, square grid with red and blue color such that no red rows are there.
रिमेंबर, लाल फूल का हम बात नहीं कर रहे हैं. वी वांट नो रेड रोज. It means I don't want this condition or this condition. So before we go further, we can see for every blocks or 1 cross 1 square, I have got two options. Either I can put red color or blue color. Similarly, for second box, we have two options, red or blue, red or blue, or red or blue. So in total, how many options I'm having? 2 to the power 4, 16 options. So 16 is total number of possibilities. But I do not want red rose. So what are the possibilities for red rod? So I can define S1 as the set where the first row is okay. So let me define S1 as a set where first row is red, and S2 as the set where second row is red. क्योंकि इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड रोजेज. ठीक है. सो व्हाट आर द हाउ आई एम एबल टू मॉडल दिस. सो बेसिकली इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज होंगे. या तो फर्स्ट रो रेड का होगा, दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग विद दिस सर्कल, और सेकेंड रो रेड का होगा, दैट विद अनदर सर्कल. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद S1 and S2. Now clearly you can see there is many possibilities, and all the possibilities I have written over here. So one childish way of doing problem will be what? You write down all the 16 possibilities and see how many of them are valid. तो जैसे मुझे कोई भी रेड रोज नहीं चाहिए, तो ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. सिमिलरली ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. आई डोंट वांट रेड कॉलम चलेगा. तो हमारे पास कितना आंसर आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ से तो मैनुअल काउंटिंग से आई गॉट आउट ऑफ 16 9 इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अब ऑफ कोर्स इसको मैं सॉल्व तो पूरा ड्रॉ नहीं करने लगूंगा लाइक अ चाइल्ड. तो हमें क्या करना है? वी नीड टू सी S1 union S2. So what is S1 union S2? It represents number of ways in which either first row is red or second row is red. तो जैसे ये S1 union S2 का हिस्सा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो रेड है लेकिन सेकेंड रो रेड नहीं है. तो ये कहाँ होगा? कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा. सो दिस इज मैप टू a member in set 1. Similarly, first row, this is also mapped to a member in set 1. This guy is a member of both set because here first row and second row both is red. So this is member in set 2. ये वाला it's member in set 1. This is a member of set 2. This guy is also a member of set 2. They are distinct member. ये भी member of set 2 and that's it. ठीक है. So S1 union S2, if I'll calculate, so you can clearly see number of element in S1 plus number of element in S2 minus number of element in S1 and S2 together. अब इसको let's not count manually with the help of pictures. अब मैं mathematically count करता हूँ. So how many elements are there which is in S1? It means I want number of element where first row is red. I don't care about the second row. Second row may be red, may not be red. So जब मैं S1 define कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दोज कंडीशन जिसमें पहला रो जो है वो रेड होगा. मींस एटलीस्ट दैट रो इज रेड, दैट्स इट. तो इफ दिस रो इज रेड, अगर मैं इसको लाल और लाल कर दूं, सो आई हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर, टू ऑप्शंस हियर. तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी 4. सिमिलरली S2 अगर रेड होगा तो विल हैव 4 ऑप्शन, क्योंकि नाउ इफ दिस गाय इज रेड, आई विल हैव अगेन 2 ऑप्शंस हियर, 2 ऑप्शंस हियर. Now, what is number of ways in which both row is red? So there is only one way in which you can color both of them red, right? So number of cases will be 8 minus 1, 7, and that is precisely we have 7 objects either in A or B. अब अपने को क्या find करना है? We need to find such that no red rows is there. So it's complementing counting. So total universe में से I will take away S1 union S2, and that will give me 16 minus 7, which is 9 and precisely our answer. I hope you got a feel of this. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. For example, they can also ask you number of element in S1 but not in S2, or number of element in S2 but not in S1. So how many are there in S1 but not in S2? It means we want first row to be red but not second. So यहाँ पे आप clearly देख सकते हो, this answer is 3. Similarly, for this answer is 3. We have answer for S1 intersection S2 is 1, and neither in S1 nor in S2. This is the remaining 9. It's 9 problem. And if we'll add all of them,
दैट इज बेसिकली द एंटायर यूनिवर्स। अब यही फंडा है जिसको आप कोई भी सेट्स पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे सीखा जो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके निगेशन को आप डिफाइन कर लो। जैसे यहाँ पे कोई भी लाल रो नहीं चाहिए, तो लाल रो नहीं चाहिए तो हम लाल रो वाले को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, S1 को, क्योंकि अब लाल रो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज को तुम एग्जॉस्ट करके सेट डिफाइन कर लो। तो या तो फर्स्ट रो लाल होगा या सेकंड रो लाल होगा, तीन रो ही नहीं है, ठीक है। और उससे फिर मैं इसको फिलअप कर दिया। सिंस मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर हु आर इन क्लास 11, इसीलिए मैं आई एम गोइंग बाय क्वाइट बेसिक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वेज we have to color so that no 2 cross 2 blocks are colored. So what are the possibilities for 2 cross 2 blocks to be colored? So either this block can be colored red, or this block can be colored red, or here I can do red coloring, or here. So I have only 4 ways of coloring, you know, like 4 major exhaustive cases in which I can color 2 cross 2 block to be red. अब उसमें many ओवर काउंटिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे. सो here is a definition of set. I am defining set A1 as the case when I am coloring this block as red, right? And that you are seeing over here. Similarly, I am defining A2 as the set when I have colored the other two, means the right corner as red. In the same fashion, A3 has been defined the bottom left corner to be red, and A4 has been defined as coloring 2 cross 2 grid, a square grid from the bottom right corner. तो हमारे पास 4 सेट को हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब कोई भी पॉसिबिलिटी ये कलरिंग का हो, इसी 4 सेट के यूनियन या उसके बाहर होंगे। तो क्योंकि आप कोई भी कलरिंग कर रहे हो, सपोज इफ आई कलर दिस विथ रेड, और फिर इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, और फिर मैं इसको रेड कर दिया, सपोज ये रेड रेड और रेड कर दिया, राइट। और मैं फिर दूसरे कलर से ये रिमेनिंग को कलर कर दिया. So by the way, in this problem, how many colors have to use? Again, seconds. It's continuation of first problem only, just with a more grid system. तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे A1, A2, A3, A4 में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि there is no 2 cross 2 blocks which is colored red. So basically we have to count these kind of situation in our problem. So now that's what I have shown. You see there are many possibilities, क्योंकि आपको कुछ ऐसा possibilities भी दिखेगा जहाँ पे, so this is valid case which I have to count. Okay, here we have definitely 2 cross 2 colored red, so this is not valid case, this is not the case I want. Similarly, this is not valid. So out of total case, I'll take away invalid case. So now precisely what we want is A1 union A2 union A3 union A4. We'll consider all those color coding in which we are not interested, because that will make either A1 or A2 or A3 or A4 to be colored. So this is what I'm not interested in. So what I'm interested in, out of total universe, you take away this answer. So now if I have two colors, तो यहाँ पे रेड कलर है और ये ब्लू कलर्स है. So how many ways are there in total to color them? So we have two ways, two ways, two ways, two ways. So it's 2 to the power 9. So number of element in full set is 2 to the power 9. Now I have to find A1 union A2 union A2 union A4. तो उसका ये काफी अच्छा सा फॉर्मूला आपको दिखेगा, which I've already shown in the beginning. So now the entire idea is to count them. So let's start counting. So number of element in A1, it means number of those coloring such that the extreme left up corner is colored red. So how many options are there for these colors? 1, 2, 3, 4, 5 boxes are there. Each boxes can be colored either red or blue. So we have 2 to the power 5. Fine. Exactly in the same fashion for A2, A3, A4, we have 2 to the power 5 over here. Now coming to A1 intersection A2. So if I take A1 intersection A2, basically we'll get a case when the first box and this second box is colored red. So what we'll see is red color over this box as well, right? So now how many options are left with us? So we have 3 options. So number of ways of doing this is 2 to the power 3.
Similarly, what about A1 and A3? Now that's technical, because if I'll take A1 and A3, so let me map A1 over here, and A3 is this box over here, right? So again, we'll have to do the power 3 options. So this still counts to the power 3. What about A1 and A4? So if I'll map A1 with A4, so A1 is over here and A4 is there. And this is interesting scenario in essence. Now I have only two options over here. So I have 2s square, which is accounted for A1 and A4. Similarly, if we'll fill up, we'll have one more 2 cube and one more 2s square. Right? So we have 1, 2, 3, 4. What about A3, A4? Since 3 and 4 is again on the same side, so that will give you 2s square. And that's it. Next, what if I'll color A1, A2, A3 with the same colors? Where is position of A1? Let me go back over here. So we have A1 coloring, and now A2 coloring, and A3 coloring. So I'm left with only one box that will give two options, right? And exactly in the same way, we'll get for all the remaining. If we'll take any three box, we'll have two options, minus when all of them is colored red. So if all of them is colored red, so A1, A2, A3 and A4, so there is only one way, right? Because you don't have any choice for the other remaining color. So that will give minus 1. So let's calculate this. We have got 4 into 32 minus 24 and minus, this will give you 2s square. How many times we got, right? So we'll get 32 plus 8, because we have 2 cube, 2 cube, 2 cube, and one more 2 cube will come into picture. So let's count this. So from here you can see we'll have one more 2 cube into picture. So it's 4 into 32 minus 32 plus 8. So which is 40 plus 8 over here and minus 1. And that gives us total number of ways of doing this is 95. So hence there are 95 ways of bad counting, and I was interested in the correct counting. Hence the answer to our problem is S1 union S2 S3 union S4 complement, and that's total to the power 9 minus 95, which will give you 417 ways of doing so. So I hope you understood the problem and understood how we are doing case making for a. So again, takeaway is very clear. जो आपसे पूछ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर दो. 2 क्रॉस 2 ब्लॉक शुड बी कलर्ड रेड. तो हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किए, नो 2 क्रॉस 2 शुड बी कलर्ड रेड. तो अब 2 क्रॉस 2 ब्लॉक कैसे कैसे कलर हो सकता है? या तो ये पोजीशन पे कलर होगा, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो. देयर आर 4 ways, so I have defined 4 subsets. Let's turn to another classical problem, and here we have again interesting situation. And the situation is this: we have to find number of ways of keeping this 3 balls of distinct colors. So this red, black and green. So it's color 1, 2, 3 in these 3 boxes of the same color, such that none of the balls goes in. So chalo third question lete hain. We have to find number of ways of keeping these 3 balls of distinct colors in the corresponding box, such that none of the balls goes to the box of the same color. इसका मतलब ये लाल बॉल लाल बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक बॉल ब्लैक बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, और ये हरा बॉल हरा बॉक्स में नहीं जाना चाहिए. So in how many ways we can do that? So one of the obvious way of doing is we can count all the 6 choices. Okay, so I want none of them should go in original color. Remember, that is known as dearrangement. Dearrangement means destroying the arrangement. I want an arrangement जहां लाल लाल के पास नहीं हो, ब्लैक ब्लैक के पास नहीं हो, और ब्लू ब्लू के पास नहीं. मतलब कोई भी none of them is going to is correct colored box. तो एक तो simple counting से I wrote down all the 3 factorial cases. 6 factorial ways are there to arrange these 3 balls, और उसको I have shown you by arranging. यहाँ पे this is not valid case.
This is not valid because red is going to red, so it's gone. This is a valid case because you see none of the ball is going to its original colored box. Similarly, this is another valid case. What about this? No, because this guy is going to its uncolored box, and this guy also no. Oh, where this guy is going? Yeah, so it's fine. What about this guy? This guy is not valid because it's not going, the black is going to black. So finally I'm left with two options. So I can tell the way to dearrange three objects will be two. Now let's try to see this with the principle of inclusion and exclusion before we go and generalize for n number of boxes and n number of balls such that none of the boxes contains the ball of same color. तो यहाँ पे what I want, I do not want red ball to go to red box. ठीक है, so फिर उसकी complement को I will define. So I will define set S1 where red ball is going to red box, set 2 black ball is going to black box, and set 3 green ball is going to green box. So according to my scheme, now I am interested in S1 union S2 union S3 का conjugate. Conjugate means I am not interested in either of the balls to go to the correct box. So it will be total number of ways in the universe minus S1 union S2 union S3. I hope this is clear. So now how many ways are there to arrange this? Total number of objects is 3 factorial minus the number of ways of getting S1 plus S2 plus S3. So number of ways of red ball going to red box will be 2 factorial because if red ball goes to red box, so this is locked. So for these balls I have two options, right? Similarly for S2 we'll have 2 factorial case, 2 factorial case minus number of ways of counting S1 and S2. So red to red and this to this. So we have only one way. And similarly it will come 3 times. So I'm writing minus 1, minus 1 and minus 1. Now number of ways when all the 3 balls goes to that box, their design box, that will be only one way because only one way you can put this red over red, black over black, and this color over red. So we have one way. So finally what we got 6 minus 3 plus 1. So that gives you answer of 6 minus 4, and which is precisely 2, which you have done like a child is counting. So the takeaway was very useful. Whenever we are counting S1, we are not taking care about where the others balls are going. I am just interested in S1 going to this red box. Okay, so for other you have free choice of 2 factorial, and that's the inherent beauty of inclusion exclusion, where you are only interested in counting objects in S1, S2, S3, ignoring what's happening to the rest of the balls and boxes, because that is automatically counted in this fashion. Next question is, we can mimic the same problem in how many ways you can arrange the letters of the word math so that no one goes to its correct position. Now correct position means, let's say we have MATH. If I take a word THMA, so T is not at the place of M, H is not at the place of H, M is not at the place of M, and A is not at the place of M. So this is a valid dearrangement where none of them is matching, right? So how many ways are there to do so? So again I have listed down all these ways, and one way of doing this is you can simply count like a kid. So let's say we have MATH. So this is just for reference. So number of ways in which you can arrange math will be 4 factorial, which is 24 ways. And all those 24 cases I have written for you. So now clearly MATH is not possible because M is matching. We do not want any one of the letters to match. ये वाला AMTH, this is also not possible. यहाँ पे देखो कुछ मैचिंग हो रहा है, नहीं तो ये पॉसिबल है. यहाँ पे कुछ मैचिंग, T is मैचिंग, so ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल है. यहाँ पे H मैचिंग नॉट पॉसिबल. यहाँ पे नथिंग मैचिंग पॉसिबल. यहाँ से H मैचिंग गॉन. दिस इज फाइन. सो लाइक दिस यू नीड टू चेक. यहाँ से T, A matching gone, A matching gone, THMA, yeah, it works. THAM, it works. A matching gone, A matching gone. STMA, STMA, it works. STAM, it works.
HMT gone, and HM80 works. So finally, how many of them are working? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And there we go. It means we have total ways of rearranging the words of letter math. The 4. So it means the total number of ways in which you can arrange the word of letter math so that none of them comes to its original position, which is D4. Destroying the arrangement of 4 letter is 9. Now, is there any cool way of doing this without counting this? Of course, yes. So again, what I'll define, I do not want M to be in front of M. So let's define set S1 where M is in front of M, right? M is at the place of M. S2 when A is at the place of A. S3 when T is at the place of T. S4 when H is at the place of H. So basically now what we want is S1 union S2 union S3 union S4. This we don't want. So conjugate is my final desired answer. Total number of possibilities minus S1 union S2 union S3 union S4. Now that's easier to count because total possibilities will be 4 factorial without any restriction minus number of object in which exactly one of them is at correct position. तो अगर मान लो m करेक्ट पोजीशन पे है तो वहां पे 3 फैक्टोरियल होगा. So 3 factorial will come 4 times minus 2 of them is a correct position. So 2 of them can go to correct position in 4C 2 ways because either let's say m and t is in correct position. So this thing can arrange into factorial ways. Then plus 3 of them is correct position 4C 3 into 1 factorial because if 3 of them are in correct position, let's say m, a and h, then t has to be in correct position. So there is no way. Means only one way. And minus when all of them are in correct position, so there is only one minus. And if you calculate this, you'll be surprised to see the answer is 9. And in fact, I give you a homework, an assignment to generalize for n, and you'll get very close and cool formula of dn. N factorial exactly in the same way. So 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on and so forth. Right? So that is basically the great rearrangement formula which I have decoded with the help of field and with the help of set notation. क्योंकि जब आप S1 union S2 ले रहे हो, जब when you are taking S1 intersection S2, it's taking care of the cases when first and second, so M and A is going to its correct position and TH might go, might not go. So there is a lot of overcounting because let's say other day you have taken M and T going to correct position and you are still allowed A and T to get. So MATH is counted so many times. So inclusion-exclusion principle is kind of a panacea which takes care of all this overcounting and undercounting by default, which I was describing. Now, sometimes it might happen that two of them is some are alike objects. So how to rearrange A, B, B? Of course, there is only one way because let's say if I have to keep B here, B here, A here, A here. So there is no other way. So here the arrangement of these 4 letters, out of which 2 are alikes of same kind and 2 are alikes of different kind. So it's definitely 1 is the answer. But the takeaway is, can we do this using principle of inclusion and exclusion? The answer is big yes. And that's fun to do it. So again, what I'll do is I can define set S1, S2, S3 and S4. And now since A and B is there, so what I'll do is, I'll name this. So let's say S star has half moon and full moon. So I'll call S1 is number of ways in which this star marked A goes to its original position, goes to its position. Similarly, S2 I'm defining when hash marked A because they are same A, so goes to its position. S3 I'm defining when this half moon B goes to its position. You could have named it A1, A2, B1, B2. And this is when this full moon B goes to its position. So basically what I want, I do not want them. So I want S1 union S2 union S3 union S4 ka bar, which is total number of ways minus S1 S2 S3 S4.
So total number of ways of doing arranging them is 4 factorial, since 2 of them is alike, so 2 factorial 2 factorial minus, now number of ways in which we can use s1 plus s2 plus s3 plus s4 minus s1 intersection s2 and so on and so forth, and you fill up all the formula. So I'll do some of them for you. So what is s1? S1 means a1 goes to its correct position. So if a goes here, we have a b b. Let's say a goes here, I'm left with s till a b b. So in how many ways they can arrange? That I have to write only for s1 account to s1. They can arrange in 3 factorial by 2 factorial. Similarly, when the second a goes there, it's still 3 factorial by 2 factorial. First b is still 3 factorial by 2 factorial, 3 factorial by 2 factorial. What about s1, s2? When both a is in the same position, so they can arrange in only one way, right? So we have to now take minus all this plus minus one way. What if two b's are in that position? So still one way. But what if one a and one b is in same position? Then a and b can arrange in 2 factorial. So here take two sets of object s1, s2, s1, s3, s4, s5. They will have two different natures. Either you'll get 1 and 2 factorial answer. And if you calculate all this, you are surprised, you still get the answer of 1. So that will be more fun. Actually, I want you to do for the word corona as well. If you don't like, you can ignore. So number of rearrangement of word corona, and try to do it with inclusion-exclusion principle. It will be fun. You can do it without that also. But at these two places, you have options to keep either C or A, and accordingly you can count in your smart. One of a beautiful application of this is in number of onto function. Now what are onto functions? So it's those functions where each and every element in the codomain set is been exhausted. So we have 1, 2, 3, 4, 5 objects in set A and 3 objects in set B. I have to map from A to B such that all the members in set B is exhausted. So for example, 1 can go to A, 2 can go to A, 3 can go to A, then 4 and 5 has to go to B and C. So this is one of the possible onto A of mapping. Or 1, 2, 4 can go to B and 3 and 5. Or let me show one more. So maybe 1, 2, 3 and then 4 going to B and 5 into A, or 5B, 4A, whatever. Now basically we can reintroduce this problem in a different fashion, and what I'm telling is we can conceive as if we have three distinct boxes, because these numbers are distinct, they are the member of sets, and 5 distinct balls. So you have got 5 distinct balls and 3 distinct boxes. Now basically asking number of onto function is same as asking number of ways in which we can keep these 5 distinct balls into 3 distinct boxes such that none of the box is empty, because emptiness means intoness, right? क्योंकि suppose अगर मैं पांचों को इसमें भेज दिया, so 2 of the object is not mapped, so that will be basically into function. Into means the range is only A, and the codomain, the box available is known as codomain, is ABC. But what you're using out of the box is only one object, right? So in how many ways you can do it? So there are many ways, and as you can see, I have again drawn pictures for you. So it might happen that ball 1, 2 falls here. Again, third ball is in box B and fourth and fifth is in box C. Or it can go other way around as also. 1, 2 in first box, then 3, 4, 5. So you can see all these possibilities are there. Clearly, these are the cases which I don't have to count because they are rendering these boxes to be empty. तो emptiness वाला तो मुझे count करना ही नहीं है. तो ये सब valid arrangement है. So these are the part of our onto function. ये तो नहीं valid है, ये valid नहीं है क्योंकि box empty हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी box empty है, देख रहे हो? तो and of course there are many more ways. Now all these pictures which I have drawn, what are these pictures? These are all possibilities in which you can put these 5 balls into 3 boxes without any restrictions. What I mean is, फर्स्ट बॉल के पास कितना ऑप्शन है? देखो, या तो ये बॉक्स ए के पास जाएगा, या बी के पास जाएगा, या सी के पास जाएगा. हाँ, तुम ये बोल सकते हो या किसी के पास नहीं जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. अगर किसी के पास नहीं गया तो फिर वो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में एवरी इनपुट को किसी ना किसी के साथ जाना ही होगा. तो फिर वो रिलेशन हो जाएगा. दैट कैन बी इन दैट क्वेश्चन. ठीक है ना, एक किसी के साथ गया ही नहीं. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो फंक्शन होने के लिए ये तो पक्का है इस तीनों ऑप्शन में से ही किसी ना किसी बॉक्स को बॉल 1 को होल्ड करना होगा. सो 1 विल हैव 3 ऑप्शन एंड सेम गोज विद 2, 3,
4 and 5. So total we have 3 का पावर 5 ऑप्शन. ठीक है. तो it's 81 into 3 which will give you 243 of possibilities. So these are some of the possibilities among the 243 answers which I am showing, and hence Golu is crying. क्योंकि ये 243 आंसर में से ऐसा ऐसा बहुत आंसर आपको देखने को मिल रहा है. तो ये सब आंसर में आपकी, तो ऑफ कोर्स 243 आंसर्स में नहीं लिखूंगा, and there you will not start searching for the answers where emptiness is not there. That will be extreme nursery kg of hunting, right? तो वो तो मैं नहीं करूंगा. तो अब मैं स्मार्टली ऐसा करता हूँ, जो हम मुझे पता है 243 आंसर्स में कुछ ऐसा आंसर्स बनेगा जिसमें सब भरा हुआ है, कुछ ऐसा भी बनेगा जिसमें एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी है या एग्जैक्टली 2 बॉक्स एम्प्टी है. सो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर. 243 आंसर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉक्सेस दैट वी आर हैविंग. 4 ही पॉसिबिलिटी होगा. सोचो, या तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी होगा, या फिर एग्जैक्टली 2 बॉक्स एम्प्टी होगा, या फिर एग्जैक्टली 3 बॉक्स एम्प्टी होगा. ये हो ही नहीं सकता है. या फिर कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है, मतलब तीनों का तीनों बॉक्स जो है भरा हुआ है. इट मीन्स या तो ये केस पॉसिबल होगा एक टाइप का जहां सब बॉक्स भरा पड़ा है, या फिर ये देखो 1 बॉक्स एम्प्टी वाला होगा, या फिर 2 बॉक्स एम्प्टी वाला दिखेगा और 3 बॉक्स एम्प्टी वाला दिखेगा नहीं. तो बेसिकली मेरे पास 3 ही कंडीशंस होंगे. ठीक है, या तो कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है, या फिर 1 बॉक्स एम्प्टी दिखा 2 भरा हुआ है, या फिर 2 एम्प्टी दिखा और 1. So now that is the basis of discrimination. That's why since I do not wanted any box to be empty, तो फिर हम उसका इनवर्स उल्टा डिफाइन कर रहे हैं. So let's define S1 to be the set when box 1 is empty. अब देखो, जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन का, like a kid you are doing against it. S2 box 2 is empty, and S3 I'm defining the set when box 3 is empty. अब तो अपने पास फिर से स्ट्रिक्ट अवे इंक्लूजन एक्सक्लूजन. I want none of the box to be empty, so I'm interested in this case, which is total number of possibilities in the universe minus S1 union S2 union S3. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इस ब्रह्मांड में क्या हो सकता है, 5 बॉल और इसके साथ, तो ऑलरेडी हैव टोल्ड यू 3 to the power 5. नाउ माइनस cases when first box is empty or second, third, minus taking 2 at a time, S2 S3. आई होप आपको काफ़ी फील आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. एंड माइनस द केस व्हेन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3. तो चलो 3 का पावर 5 माइनस. नाउ हाउ मेनी वेज आर देयर इन व्हिच फर्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी. तो अब चलो फर्स्ट बॉक्स अगर एम्प्टी हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है ये बॉल के लिए. अब इस बॉल के लिए ये रास्ता तो खुला ही नहीं है, क्योंकि अब ये बॉल के पास 2 चॉइस है, या तो इसमें जाओ नहीं तो इसमें जाओ. ठीक है, सो विल हैव 2 चॉइस ईच फॉर ईच ऑफ द 5 बॉल्स. करेक्ट, क्योंकि एक को एम्प्टी रखना है. तो वी हैव हाउ मेनी वेज 2 का पावर 5. सिमिलरली सेकंड वाले को एम्प्टी रखो तो फिर उसके पास 2 ही चॉइस होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले में जाने का. सिमिलरली दिस माइनस अगर 2 एम्प्टी रख दे, अब दिस रोड इज आल्सो ब्लॉक्ड. अब बाय बॉल 1 क्या करोगे, बेचारा बॉक्स सी में ही जाना होगा. अगर मैं ए और बी को एम्प्टी कर दूं तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है. सिमिलरली 1 3 से भी एक ऑप्शन आएगा. आप काफी तेज बच्चे हो मुझे पता है. और लास्ट से भी एक ऑप्शन आएगा. प्लस तीनों का तीनों में से कहीं नहीं जाना है, तब तो ये बॉल बुरा मान जाएगा क्योंकि कहीं जाना ही होगा. इसको तो इसके बाबूजी यहाँ है ना, जो भाई कहीं ना कहीं तो मुझे जाना ही, बिकॉज इट्स अ फंक्शन. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर व्हेन 1 विल नॉट गो टू एनी ऑफ द बॉक्सेस, 0 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस केस में. 3 का पावर 5 दैट गोज टू 243 माइनस 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, और ये आ जाएगा प्लस 3. तो फाइनली वी हैव 243 माइनस 96 प्लस 3 विच विल गिव यू 246 माइनस 96. और ये आपका प्यारा सा जो आंसर बनने को आया वो आ गया 150. इट मीन्स देयर आर 150 वेज in which none of the box is empty. Out of those 150 answers, these were some of the sample answers. 3 4 5 ये तो नहीं था. ये सब इम्टेनियस के केसेस थे जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया.
तो आई होप आपको काफी क्लियरिटी मिल गया और पूरा तुमको पता चल रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर से मैं एक बार बताते चलो, जब तुम S2 S3 को एम्प्टी रख रहे हो और पूरे बॉल को इसमें भेज रहे हो, ठीक है, और कभी तुम S1 S3 को एम्प्टी रख के इसमें भेज रहे हो, तो ये तो अलग अलग केसेस काउंटेड हो गए। लेकिन ओवरलैपिंग भी हो रहा है, देखो कैसे, जैसे ऐसा हो रहा है तुम 3 बॉल को यहाँ रख दिए और 2 बॉल को यहाँ रख दिए, 5 बॉल, ठीक है, जब तुम इसको एम्प्टी रखे। और फिर ऐसा भी हो रहा है जो तुम कभी 2 बॉल को यहाँ रख दिए और फिर 3 बॉल को यहाँ रख दिए। तो ये बहुत सारा केसेस जो है ना, बहुत सारा केसेस, वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली ओवर काउंट हो रहा है, इसीलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब 2 बॉक्स एम्प्टी हो रहा है तो फिर उसमें से ओवर काउंटिंग का केस ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो द केस, सो हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर, सो देयर आर 5 factorial ways in which Golu can put this in this boxes. Similarly, भोलू कितने तरीका से इस पांचों बॉल को इस 5 बॉक्स में रख सकता है, such that एक एक बॉल he has to put 1 ball to each one of the boxes. Find the number of ways in at least 1 box get same color. So this is quite interesting problem, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, आप देख सकते हो कि हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का यूज करने वाले हैं। तो it is possible like Golu has also kept this red one in ball box 1, Bholu also kept red ball in box 1 and Vicky kept red in box 1, या फिर गोलू भोलू बिक्की रेड को बॉक्स 1 में डाला और फिर ये ग्रीन वाले को भी बॉक्स 1 में डाला, और मे बी दे हैव केप्ट 3 different colors in the same box, so 3 distinct box contain same color or 4 distinct box contain same color, you can see from here, or all the 5 distinct box contain same color. Now when all the 5 distinct box contain same color, ठीक है, मतलब ऐसा हो गया बाई चांस, जिसका चांस बहुत कम है, जो तीनों का तीनों बंदा रैंडमली कलर्स डाला और पांचों का पांचों बॉक्स में सेम कलर चले गया है, ठीक है, इसका चांस बहुत कम है। अब दैट इज डेफिनेटली दीज टू सिचुएशन इज डिफरेंट, बिकॉज इट ऑल्सो मैटर्स, लाइक बॉक्स 1 में रेड गया और बॉक्स 2 में गया और बॉक्स 3 में गया, सो दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट ऑफ कलर ऑल्सो मैटर्स। तो आपको बताना है हाउ मेनी वेज आर देयर एट लीस्ट 1 बॉक्स गेट सेम कलर। तो अब तो अगेन द पिक्चर इटसेल्फ शोज यू द आंसर। So पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, either 1 box will have same color or 2 box will have same color or exactly 3 box or exactly 4 or exactly 5, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, और no box will have same color or distinct, that's I have to count, right? तो at least के लिए what will happen, I'll define S1 when 1 box gets same color, not at least 1 box gets same color. S2 हम define कर रहे हैं when 2 box get same color. S3 I'm defining when 3 box get same color. S4 when 4 box get same color, and S5 when 5 box, all 5 box get same color. ठीक है, so according to the question I need to find S1 union S2 union S3 union S4 union S5 का magnitude, इसमें तो at least one of them will definitely get same color। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको mod S1 प्लस mod S2 mod S3 प्लस mod S4 प्लस mod S5 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट टेकन टू एट अ टाइम, सो ये 10 केसेस आएंगे ऐसे टिल S4 S5, and again plus we'll have 3 at a time, S1 S2 S3, right? And then plus S1 S2 S4 and so on, then minus taken 4 at a time, and then plus taken 5 at a time. So what will you show, let's count the number of ways in which 1 box gets same color. So let's say that is box number 1. So since they have already got same color, so first what I'll do is I'll select one of the boxes,
So I can select one of the boxes in how many ways? It is 5, choose one. And now again I'll select the color to be placed in that. So out of 5 color I have to select again one color. So 5, choose one, 5, choose one. Now in how many ways I can put them here? There is only one way. So that way you can see over here. For the remaining, how many options are there? 4 factorial for Golu to keep, 4 factorial for Golu, and 4 factorial for Vicky. So that will give 4 factorial whole cube, right? That is the number of ways in which one box gets same color. Now this has also counted already the possibilities where two box has got same color. ठीक है, तो अब आप देखो, if you are defining the set like this, S1 has one box getting same color, S2 has two box getting same color, this is completely the wrong way of defining. And that was the point, because unfortunately I have seen one of the textbook of some coaching institute where they have defined the set notation like this for this kind of problems. तो यहाँ पे क्या होगा ना, S1 मतलब वन बॉक्स सेम कलर का है, S2 अगर टू बॉक्स सेम कलर का है, तो फिर this is not exhaustive, because if you will take S1 union S2 union S3 union S4 union S5 and plus rest over, that will not give the entire set, क्योंकि यहाँ तो खुद overlapping is there in S1 and S2, right? So this should be disjoint, this should be disjoint when you are taking into care. तो आप इसको ऐसे, आई हैव सीन टेक्स्ट बुक जहाँ पे ऐसे किया, तो आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना होगा, यहाँ पे डिफाइन करना होगा S1 is when box 1 gets same color, S2 is box 2 getting same color, similarly S5 box 5 getting same color. So I'm defining Si is when box I gets same color, and then you can do all this, right? So S1 is when box 1 gets same color, so that will be just 4 factorial cube. Similarly S2 is 4 factorial cube times 5c1, which color you have to pick, and then this. और ऐसा 5 मेंबर है, so 5c1 into 5c1 1 factorial into 4 cube, right? तो अब आप रिलैक्स करके बोल सकते हो उस डेफिनेशन से, तो ये वाला तो गलत है और ये करेक्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ से फिर नाउ माइनस, नाउ व्हेन टू ऑफ द बॉक्स गेट सेम कलर, तो मान लो अगर ये दोनों बॉक्स सेम कलर कर लिया, सबसे पहले तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा 5 चूज 2, फिर कलर को सिलेक्ट करूंगा 5 चूज 2, और फिर कितने वे में वो दोनों कलर को उस बॉक्स में मैं रख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल। बचा मेरे पास 3 कलर्स गोलू के पास, दैट ही कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, फिर गोलू भी 3 फैक्टोरियल, बिक्की भी, सो इट्स 3 फैक्टोरियल क्यूब विल come. Next, when 3 of them same color, so 5 choose 3, choose the box, choose the color, arrange the color. Remaining with Golu is 2, same with Bolu and Vicky, so whole cube. Then choose 4 of the boxes. In each of boxes, first choose 4 color, put in the boxes. Color can arrange in 4 factorial ways. Bacha ek ball, only way to like arrange them is 1 cube. And then what is the last thing? Last thing is, out of 5, choose all the 5, choose all the colors, arrange them in 5 factorial ways. रिमेनिंग अब बचा हमारे पास 0 फैक्टोरियल, गोलू के पास कुछ है ही नहीं, सो देयर इज ओनली 1 बाय 0 फैक्टोरियल क्यूब, एंड इफ यू ऐड दैट यू विल गेट एन आंसर that is left just for calculation to you, and that's the answer for this beautiful problem. तो आप देख रहे हो कैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को अप्लाई किया, और डिफरेंट सिचुएशंस में उसको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इवैल्यूएट करके हमने सिर्फ एक चीज सीखा वही पूरे लेक्चर से, and this is known as alternate version of principal inclusion, जहां पे whatever is being asked you define the negation of that quantity as your set, and always try to make sets before you do these kind of problems, else you will definitely get wrong answer, which was the takeaway from the last question, क्योंकि अगर इसमें आप सेट गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, समझ ही नहीं पाओगे S1 S2 क्या है।
तो सिंपल तरीके से हमने डिफाइन किया S1 जब बॉक्स 1 में सेम कलर है, S2 बॉक्स 2 में सेम कलर है, 3 सेम कलर है, 4 में होगा, 5 में होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब तुम S1 अगर हम डिफाइन कर रहे थे ना 1 बॉक्स सेम कलर और S2 2 बॉक्स सेम कलर, तो उसमें तो खुद में ओवरलैपिंग है S1 यूनियन S2, S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। S1 इंटरसेक्शन S2 में एक बॉक्स सेम कलर होना चाहिए एंड 2 बॉक्स सेम कलर होना चाहिए। तो S2 इज ऑटोमेटिकली इनगल्फिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर S1। तो ऐसे गलत सेट को डिफाइन हम नहीं कर सकते। ओके, इफ यू हैव रियली एंजॉयड दिस लेक्चर एंड इट टुक ऑलरेडी लॉट ऑफ एफर्ट, ये पिक्चर्स बनाना और फिर आपके सामने बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज और चाइल्डिश फैशन में भी इसको प्रस्तुत करना में टाइम लगता है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको लग रहा है ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, वेलकम विथ